सभी को नमस्कार. Sir and Bhante ji, over to you. Shall we first pay our respects to Bhante? Yeah. आए हम सब मिलके Bhante को नमन करें. 1 मिनट में स्पॉटलाइट पे रख देती हूँ. नमन नमन नमन. Bhante ji, over to you. Okay, so आज की इस पावन संध्या पर सबका स्वागत है. और हम लोग पहले कुछ जो हमारी ओपनिंग चैंट्स हैं और जो बुद्ध धम्म संघ के जो गुण हैं उनको रिकलेक्ट करेंगे और फिर ओवागा पाटिमोक्ष का तीनों भाषाओं में पाठ करेंगे. योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्खातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो धम्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सखारे हि यथारहं आरोपिते हि अभिपूजया. पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सखारे दुगतपनाकारभूते पटिगह्नातु अंहाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाक्खातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि. अन्नमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभागनमकरं करोमस्ये. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्ध धम्म और संघ के गुणों का हम पाठ करेंगे. इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी
सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवा अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्छत्तं वेदितव्यो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो ऊजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति उदा पटिमोख is working. Okay. Actually, okay, just now. अन्नमयं ओवाद पटिमुख गाथायो मनामसे सब पापसकरणं कुशलासु संपदा सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं सभी प्रकार के पापों को न करना, कुशल कार्य का संपादन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। Not doing any evil, to be committed to the good, to purify one's mind. These are the teachings of all Buddhas. Hanti paramang tapoti tikha, nibbanang paramang vadanti buddha, nahi pabajjato parupghati, samano hoti parang vihethayanto. धैर्य एवं शांति ही परम तप है। भगवान बुद्ध कहते हैं, निर्वाण ही श्रेष्ठ है। सच्चा प्रवर्जित दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, न कोई श्रमण दूसरों को परेशान करता है। Patient endurance is the highest practice, burning out defilements. The Buddhas say Nibbana is supreme. Not a renunciate is one who injures others. Whoever troubles others can't be called a monk. Anupavado anupaghato patimokhe cha sangvaro matanyata cha bhatasming patanya cha sayanang asanang adhichitte cha ayogo etang buddhana sasanang. न किसी का अपमान, न किसी को घायल करना, पटिमोख का पालन करना,
भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान, एकांत में रहना एवं शयन, उच्च कोटि के चित्त के प्रति श्रद्धा, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। Not to insult and not to injure, to live restrained by training rules, knowing one's measure at the meal, retreating to a lonely place, devotion to the higher mind. These are the teachings of all Buddhas. आज शाम और आधी रात तक हम ये संगीति सुत्त का पाठ करेंगे। आप में से कई लोगों को शायद ये पता होगा कि ये ट्रेडिशन रहा है और सुत्तों में भी कई जगहों पर ये आता है कि उपोषण के दिन भिक्षु इकट्ठा हुआ करते थे और काफी देर तक धर्म चर्चा चलती थी। तो एक तरीके से हम लोग सब आज उसी ट्रेडिशन को बनाए रख रहे हैं, बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से। और हम लोग so we will really like to participate in a charcha rather than just a few of us holding forth. और आप लोग जानते हैं हमारे ट्रेडिशन में जो मोनेस्ट्रीज हैं उनमें भी उपोषण की बहुत भूमिका है। तो मैं अभी मेरे साथ शांत और निलय हैं यहाँ पर धमाराम में, उनको बता रहा था कि वाटपानाना चात में भी सब लोग they must be putting forth effort, mainly focusing on walking meditation but also other forms. So personally for me it's really it brings a lot of inspiration and devotion and great memories to also begin to recreate the same tradition here in India. Just for your information, typically उपोषण के दिन गृहस्थ जो हैं वो मोनेस्ट्री में आते हैं और 8 शील सुबह धारण करते हैं और फिर सारा दिन जो है वो उन्हीं 8 शीलों के आधार पे रहते हैं। This has also been the Buddha's advice. So आज शांत ने भी यही follow किया है. So he's been here with us through the morning, through the day, and will continue all through the night. आज जो हम सुत्त स्टडी करेंगे उसके सिलसिले में काफी लंबा सुत्त है। सो ये it's pretty obvious that हम लोग आज उसका एक पार्ट करेंगे और हमारी इंटेंशन ये है कि इसी तरीके से हम उपोषण जो है उसको ऑब्जर्व किया करें स्टार्टिंग टुडे। अब we will probably only do it once in a month जो full moon वाला है, but maybe that will change. It's an evolving system, so we are not yet sure exactly हम किस frequency पे करेंगे, but at least जो full moon उपोषण है वो तो हम किया ही करेंगे observe. So संगीति सुत्त जितना हम आज cover कर पाएंगे we'll then carry it forward during the next uposatha meeting, and it's very likely that we'll adopt the same format कि हम लोग 9:30 बजे शुरू करें and we go through till midnight. क्योंकि ये सुत्त इतना लंबा है और क्योंकि इसके कुछ खास पार्ट्स हैं जो कि धर साहब हमें बताएंगे. So my encouragement is that जब हम इसको I will basically read through it and try and share जो मेरी समझ है इसमें जो कहा जा रहा है उसके बारे में. और कई चीजें ऐसी होंगी जो शायद हमारे लिए नहीं हैं या जो हम in the context of Buddha's teaching सुनने के आदि नहीं हैं. So I would encourage people to actually interject and
either ask questions or share their own perspective as we go. तो ये जरूरी नहीं है कि अंत तक ही हम वेट करें. We can, जैसा मैंने बताया शुरू में, ये चर्चा का आज शाम को मकसद है. So you're all welcome to contribute and create the discussion rather than wait till the end. We also will dedicate merits at the end, and we have a few requests here of people who are in difficult situations. So we'll do that towards the end. Okay, so मैं धर साहब को invite करता हूँ, हमें इस सुत्त की भूमिका दें, बैकग्राउंड दें. और जैसे कि अजानचा हमें कहा करते थे, we should try and listen to the Dhamma with our heart rather than with our ears. So अभी धर साहब जो हमें बैकग्राउंड देंगे, होपफुली वो जो हमारे हार्ट का एटीट्यूड होगा वो सेट करेगा for the next about 2 hours or so. धर साहब. वैसे तो इस सूत्र में बैकग्राउंड इसके अंदर खुद ही अंतर्निहित है, तो मैं बोलूँगा तो शायद वो आप उसको फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई उसमें बात नहीं. बेसिकली ये सूत्र उस परिस्थिति में दिया गया था जबकि जैन संघ में है बिखराव हो गया था, जब उनके लीडर का देहावसान हुआ और बिखराव के बाद आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया था. तो उस परिप्रेक्ष्य में वेनरेबल सारिपुत्ता ने प्रवचन दिया था. उसकी सूत्र की भूमिका ये है कि भगवान एक मरलों के जो गांव है या शहर है पावा, वहाँ गए थे और वहाँ पे एक नया हॉल बना था. तो पावा ने मरलों ने कहा कि आप आइए, हमारा नया हॉल है, आप आएंगे तो उसका इनॉग्रेशन कर दीजिए, एक तरह से यू कैन से इन मॉडर्न टर्म्स. तो भगवान ने वहाँ गए और उनका एक चेंज हुआ, एक डिस्कोर्स दिया काफ़ी लंबा. वो डिस्कोर्स इस सूत्र में नहीं है. और उसके बाद जब काफ़ी रात्रि हो गई तो भगवान ने कहा कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब आप जाइए, आराम करिए. तो वो सब उठ के चले जाते हैं और भगवान देखते हैं कि जो भिक्षु लोग हैं वो तो अभी काफ़ी सजग रहते हैं. एंड तो भगवान सारिपुत्र से कहते हैं कि देखो ये जो संघ है बड़ा शांत बैठा हुआ है और स्पष्ट है कि इसमें उसके शब्द करते हैं विगत थिन्न मिद्धो, कोई थिन्न मिद्ध नहीं है. तो ऐसा करो सारिपुत्र, आई वांट टू गिव देम अ राउजिंग धम्मा टॉक, ताकि वो इंस्पायर हों. मेरी तो कमर में दर्द है, मैं यहाँ अपनी संघाटी खोल के लेट जाता हूँ. तो भगवान लेट जाते हैं और फिर वेनरेबल सारिपुत्ता वो उस बैकग्राउंड देते हैं कि भाई देखो ऐसा हुआ है और उसका कारण यही है कि उन लोगों ने अपनी शिक्षा को प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं किया और भी कारण है कि वो कभी इसी कारण से ऐसा ना हो जैसा वहाँ हो रहा है वैसा भगवान की शिक्षा में ना हो. तो मैं चाहता हूँ कि हम जो भी भगवान ने शिक्षाएं दी हैं उसको एक संक्षिप्त तरीके से हेडिंग वाइज बता दें कि उसमें ये कॉन्सेप्ट भगवान ने समझे दिए हैं. और ये अच्छा हो अगर हम कि उस कॉन्सेप्ट्स को चांट किया करें, रेगुलरली चांट किया करें, ताकि संघ में कोई डिस्प्यूट ना हो, साधना के बारे में, मार्ग के बारे में कोई डाउट ना रहे. और वी डू इट आउट ऑफ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकाय अनुकंपाय. तो उस भावना से वो प्रवचन दिया. और उसमें मुख्य बात यह है कि काफी कॉन्सेप्ट जो भगवान की शिक्षा के विभिन्न सूत्रों में है उनको संक्षेप रूप में, कॉन्सेप्ट्स के रूप में वेनरेबल सारिपुत्ता ने दिया. और वो एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में दिया. पहले नंबर 1 में कि एक एक शिक्षाएं क्या हैं, फिर 2 में 2 शिक्षाएं क्या हैं, जैसे हम उत्तर निकाय में उस तरह से हैं. और वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं, कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे फेमिलियर नहीं है, लेकिन वो सारे हमारी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसको पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है. कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे अभी साधना के लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, तो हमने सोचा कि उसको अभी रहने देंगे. दे आर टॉकिंग अबाउट हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन विच आर नॉट विद इन आवर रीच एज ऑफ नाउ. तो
तो जो हमें लगा कि जो चीज़ें हमारे साधना के साथ बहुत उसका संबंध है, उनको हाईलाइट करके उनको डिस्कस करना चाहेंगे इस सूत्र में। और क्योंकि बहुत लंबा सूत्र है तो इसलिए उसमें सूत्र के अंदर ही बना हुआ है एंड ऑफ फर्स्ट रेसिटेशन सेक्शन, एंड ऑफ सेकेंड रेसिटेशन सेक्शन। तो फर्स्ट रेसिटेशन सेक्शन जो है 4 चौकों के बाद समाप्त होता है, तो वहां तक हम आज करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ना भी हो, तो कोई इसमें हमें जल्दी नहीं है, देन वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट उपनिषद एंड सो ऑन। तो संक्षेप में इतना ही कहेंगे, फिर जैसे चर्चा होगी देन वी कैन टेक अप द इश्यूज। Okay, thank you, Darshan. Thank you very much. So मैं शुरू में ऐसा करूंगा कि for the first few pages, जब तक कि वो कैटेगरी शुरू होती हैं, तब तक मैं उसको as it is अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, और थोड़ा मैं उसको हिंदी में समराइज कर दूंगा, so that we all have the background just like Dharsab has described. And just to reiterate, you're all welcome to interject, ask, add something as we go. उसमें कोई आपत्ति नहीं है. So it's more like it is a discussion. It's not just more like a discussion. So Digha Nikaya 33, Sangiti Sutta. So I have heard. At one time, the Buddha was wandering in the land of the Mallas, together with a large sangha of 500 mendicants, when he arrived at a Mallan town named Pava. There he stayed in Chunda, the smith's mango grove. Now, at that time, a new town hall named Ubbhattaka had recently been constructed for the Mallas of Pava. It had not yet been occupied by an ascetic or a Brahmin or any person at all. The Mallas of Pava also heard that the Buddha had arrived along with a large sangha of bhikkhus and was staying in Chunda's mango grove. Then the Mallas of Pava went up to the Buddha, bowed, sat down to one side and said to him, "Sir, a new town hall named Ubbhattak has recently been constructed for the Mallas of Pava. It has not yet been occupied by an ascetic or Brahmin or any person at all. May the Buddha be the first to use it, and only then will the Mallas of Pava use it. That would be for the lasting welfare and the happiness of the Mallas of Pava." The Buddha consented in silence. Then, knowing that the Buddha had consented, the Mallas got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right. Then they went to the new town hall, where they spread carpets all over, prepared seats, set up a water jar, and placed a lamp. Then they went back to the Buddha, bowed, stood to one side, and told him that all preparations had been made, completed. Seat for the Lord has been prepared, water jar has been set up, and an oil lamp has been placed. Please, sir, come at your convenience. Then the Buddha robed up, and taking his bowl and robe, went to the new town hall together with the sangha of mendicants. Having washed his feet, he entered the town hall and sat against the central column facing east. The sangha of mendicants also washed their feet, entered the town hall, and sat against the west wall facing east, with the Buddha right in front of them. The Mallas of Pava also washed their feet, entered the town hall, and sat against the east wall facing the west, with the Buddha right in front of them. The Buddha spent most of the night educating, encouraging, firing up, and inspiring the Mallas with a Dhamma talk. Then he dismissed them. "The night is getting late, Vasetas. Please go at your convenience." "Yes, sir," replied the Mallas. They got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right before leaving. Soon after they left, the Buddha looked around the sangha of mendicants, who were so very silent. He addressed Venerable Sariputta. "Sariputta, the sangha of mendicants is rid of dullness and drowsiness. Give them some Dhamma talk as you feel inspired. My back is sore, I'll stretch it."
तो संक्षेप में ये सुत्त जो है वो, जैसे कि धर साहब ने हमें बताया, वो एक एपिसोड है, घटना है जब एक नए शहर में एक शहर में जाते हैं बुद्ध अपने कई सारे भिक्षुओं के साथ, और वहाँ एक नया हॉल बनाया गया है और वहाँ के जो लोग हैं वो उनको आमंत्रित करते हैं उस हॉल को ऑक्यूपाई करने के लिए, और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए बुद्ध वहाँ जाते हैं। शुरू में गृहस्थ भी साथ में इकट्ठे हैं भिक्षुओं के साथ, तो काफी समय उनको बुद्ध अलग अलग अपनी जो शिक्षा है उसके बारे में बताते हैं, और रात लेट हो जाती है, काफी देर हो जाती है, तो जो गृहस्थ हैं उनको बुद्ध इनवाइट करते हैं कि वो वापस जा सकते हैं, और भिक्षु अभी भी अलर्ट हैं, हॉल में बैठे हुए हैं। सो बुद्ध जो है वो वेनरेबल आयस मां सारिपुत्र को इनवाइट करते हैं कि आप भिक्षुओं को आगे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगा। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ आती है कि जो बुद्ध का एक बहुत ह्यूमन नेचर है वो हमारे सामने आता है कि उनके पीठ में दर्द हो रहा है, वो आराम करते हैं और सारिपुत्र को इनवाइट करते हैं भिक्षुओं को देश ना देने के लिए। Yes, sir, Sariputta replied. And then the Buddha spread out his outer robe, folded in four, and laid down in the lion's posture on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware and focused on the time of getting up. Now at that time, the Niganth Nathaputta had recently passed away at Pava. With his passing, the Jain ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and disputing, continually wounding each other with barbed words. You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training. What you understand this teaching and training? You're practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic, you don't. You said last what you should have said first. You said first what you should have said last. What you've thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on, save your doctrine. You're trapped. Get yourself out of this if you can. You'd think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics. And the Niganth Nathaputta's white-colored lay disciples were disillusioned, dismayed, disappointed in the Jain ascetics. They were equally disappointed with a teaching and training so poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without a refuge. Then Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, that's what happens, reverends, when a teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha. But this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is a fully awakened Buddha. You should all recite this in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, out of compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of devas and humans. And what is this Dhamma that has been well proclaimed by the Lord? So ये वो समय था जब जो निगंथ नाथपुत्र, जो कि महात्मा महावीर के लिए नाम और शब्द यूज किए जाते हैं सुत्त में, उनका तभी निधन हुआ था। और जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके भिक्षु थे, और जो उनके भिक्षु थे, ऐसा समझ आता है इसमें कि उनमें आपस में बहुत डिसएग्रीमेंट्स थी, बहुत वाद विवाद थे, और वो भिक्षु जो थे वो जो
मेंडिकेंट्स थे वो असफल रहे उनके टीचर की जो शिक्षा थी उसको एक दूसरे को बताने में, अपने फॉलोअर्स को बताने में। तो बेसिकली संघ में बहुत ज्यादा मतभेद थे, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट थी। और जो उनके गृहस्थ फॉलोअर्स थे वो इस बात से बहुत परेशान थे कि हमारे जो हमारे एस्थेटिक्स हैं, जो कि हमारे टीचर्स हैं, वो जो रास्ता बताया गया है उसको ठीक से खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और उसको टीच नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो सारे पुत्र अपने जो भिक्षु हैं जो भगवान बुद्ध के साथ आए हुए हैं उनको इस बात का उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा डॉक्ट्रिन है, जो हमारी टीचिंग है, उसको हम ठीक से समझे हों और उसको हम समझा सकें। सो ये जो रेसिटेशन है वो अब उस मकसद से किया जा रहा है। तो जो वंस का सेक्शन है वो अब हम शुरू करते हैं। There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the perfected one, the fully awakened Buddha. We should all recite these in concert without disputing, so that the spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of devas and humans. What are the teachings grouped by one? So जो वन का सेक्शन है इसको हम विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये दीज आर थिंग्स वी आर फेमिलियर विद। पहला है ऑल सेंटिएंट बीइंग्स आर सस्टेन्ड बाय फूड, आहार की बात हो रही है इसमें। और दूसरा है ऑल सेंटिएंट बीइंग्स आर सस्टेन्ड बाय कंडीशंस, संखार की बात हो रही है। सो पहला है ग्रॉस सॉलिड फूड और दूसरा संखार। तो ये वंस का सेक्शन है। टूज का सेक्शन पे हम आते हैं। There are teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by two? So इसमें जो पहले 5 बिंदु हैं, these are things we are familiar with. नाम रूप, ignorance and दूसरा है ignorance and craving, अविद्या और भव तन्हा। तीसरा है views favoring continued existence and viewed favoring ending existence, विभव और भव दिट्ठियों की बात है। चौथा है हीरी और उत्तपा, लैक ऑफ हीरी एंड लैक ऑफ उत्तपा। और पांचवा इज इट्स ऑपोजिट, हीरी एंड उत्तपा। अब इसके बाद के जो हैं, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 6, बीइंग हार्ड टू एडमॉनिश एंड हैविंग बैड फ्रेंड्स, दो वच सत्ता च पापमित्तता। सो हमें लगा कि ये जो बीइंग हार्ड टू एडमॉनिश है, दिस इज समथिंग दैट मे बी हेल्पफुल फॉर अस, खास करके इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब हम एक प्रोफाउंड टीचिंग की बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने कितने अलग अलग तरीकों से धम्म को हमारे सामने रखा है, और हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग पर्सनालिटीज के अनुसार टीचिंग जो है वो बताई जाती है, समझाई जाती है। उस कॉन्टेक्स्ट में बीइंग ईजी टू एडमॉनिश या बीइंग हार्ड टू एडमॉनिश, ये जो 6 और 7 हैं, दो वचा सत्ता और सुवचा सत्ता, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। that becomes quite relevant। अगर मेरा जो एटीट्यूड है वो इस तरह के का है कि मैं एक टीचर को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मैं सरेंडर कर सकता हूं, शायद तभी ये संभव है कि ये जो इतनी प्रोफाउंड, इन सम सेंसेस इतनी कॉम्प्लेक्स टीचिंग है वो मेरे समझ आए। सो वी थॉट इट्स इम्पोर्टेंट टू आउटलाइन ये जो 2 बिंदु हैं, being easy to admonish or being hard to admonish। और जो गुड फ्रेंड्स वाली बात है, that is perhaps something that we understand better। वो कई सूत्रों में आती भी है कि किस हद तक हमारी प्रगति होती है धर्म के मार्ग पर, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी कंपनी कैसी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वी आर इन टच विद। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन फिर से मैं लाना चाहूंगा कि कल्याण मित्रता का जो जिक्र है यहाँ पर, उसका कॉन्टेक्स्ट इस केस में शायद जो एक सामान्य रूप से हम कंपनी या मित्रता समझते हैं उससे है, पर कई और जगहों पर
कल्याण मित्रता का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्पेसिफिकली एक टीचर के कॉन्टेक्स्ट में है, और कल्याण मित्र की कई सारी क्वालिटीज अलग अलग तो में हैं। हमने कुछ महीने पहले इसका डिस्कशन किया था। So it's important participation between these two, and maybe at this point I can request Dharsab to come in and perhaps clarify if we are talking about two different things here. यहाँ पे भी वही मीनिंग है एक्चुअली। इसको सोच और सत्ता के साथ जोड़ने का तात्पर्य यही है कि कल्याण मित्र जो है उसके लिए एडमॉनिश करना आसान होना चाहिए। So actually, by joining these two things, the implication is that the person, Kalyan Mitra, is the one whom you wish to seek guidance from. So he will be able to give guidance only if you are easy to admonish. अगर आप उनकी बात सुन के समझते हैं और उस पर फॉलो करते हैं। The reason that these two have been clubbed, मुझे ऐसा लगता है इसका रीजन वही है जो आप कह रहे थे। वो ट्रांसलेशन की अपनी अपनी सीमा है, उसका तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। I also have a question. जी, ये जो भव दिट्ठी और विभव दिट्ठी है, typically we come across the terms bhav tanha and vibhav tanha. yeah, So how are they related? मतलब ऐसे लगता है कि ये वहीं से flow हो रहा है, पर अगर if there's any nuance to it, अगर आप सर इस पे कुछ गाइड कर सकें। there is one is the view of that kind, you know, and that view then it becomes the forerunner of actually getting into that tanha. View मतलब हमारा विश्वास है कि continued existence बहुत अच्छी चीज है, and then we really work for it, so we want to hold on to it. तो कुछ भी हम काम करते हैं अगर जीवन में, तो पहले वैसा व्यू बनता है, फिर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो उस सेंस में इसको देखना चाहिए। That view is the fundamental thing which gives us where to go. So जो annihilistic view है जिनका, वो they'll follow the vibhav tanha, and then vibhav tanha will become dominant in them. जिनका एटर्नलिस्टिक व्यू है वो भवदिट्ठी उनकी होगी। उनका विचार है कि हाँ एग्जिस्टेंस तो हमेशा रहता है, सच्चिदानंद है, एंड देयरफॉर दे वुड लाइक टू फॉलो दैट, कि हम एटर्नल एग्जिस्टेंस में मर्ज हो जाएं, समथिंग ऑफ दैट काइंड। सो दिस वी विल फाइंड रिपीटेडली इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस आल्सो, दैट the kind of practice and the teaching is very finely subdivided. जो अटेन करना है उसके जो व्यू है और उसके लिए जो थॉट प्रोसेस है, उसके लिए जो इंटेंशन है, all these are separately identified, you know, because and you see the all this is possible because somebody has a very sharp prajna who can decipher where exactly the person can get trapped in that situation. Normally हम भव तन्हा विभव तन्हा कहते हैं, and we look at it as interaction coming from the ignorance. We don't go into details of that. Before that happens, there has to be a view of that kind. हमारा विचार ऐसा है, हम संसार को देखते हैं उस दृष्टिकोण से, तो फिर नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाएंगे। जी सर एक और प्रश्न है कि ये यहाँ पे जो अहीरी भी लिया गया है और फिर हीरी भी लिया गया है, सो व्हाट इज द रीजन कि इस तरीके से ऑपोजिट्स को कवर किया है यहाँ पे? Whole idea is that we should know that these concepts have been given so that we know all of them. We know both sides of it. हीरी क्या है और अहीरी क्या है, both sides. कि what is shamelessness and what is conscience or moral shame. तो दोनों aspects को पूरी तरह जानेंगे तो then we will be able to distinguish. क्योंकि कई बार ambiguity हो जाती है, and we can remain in that ambiguity for and then justify actions based on the ambiguity. So the characteristic of Venerable Sariputta's talks is absolutely cut across every ambiguity and put it very straight. सम्मादिट्ठी में आपने देखा होगा कितनी तरह से उन्होंने सम्मादिट्ठी को समझा दिया, that you can see it here.
And all this is actually a part of Abhidhamma. I didn't mention it, I could have mentioned. All these things are part of the Dhamma Sangini, the first book of Abhidhamma Pitaka. Majority of these have become part of that. Though these are taken from suttas actually. Most of these are teachings of this Buddha in small suttas scattered all over the Tipitaka. That's why is it called Sangiti Sutta? It is to be recited. Sangiti means recitation. Okay. So because at the end of the sutta, Buddha gets up and tells them, good Sariputta, yes, because you should remember and recite it periodically. इसमें जो भव दिट्ठी और भव तन्हा के बारे में आपने बताया, continued existence और ending existence, उसका opposite भी जो बताया, is this, I think there's probably some relevance of this to a discussion that usually happens in Sutta about what happens to Buddha after his passing away. Yeah. So I was wondering whether you can throw some light on that. Yeah, it is basically related to that view of having that our identity is with the pure consciousness, that kind of a view. Then you say, yeah, you are eternally existing in some very higher realm of existence after enlightenment. So he's trying to point out that वो जैसे सुत्ता हमने जैसे आपने reference बताया, there are many sutta where he points out this question is irrelevant because it doesn't exist, this question. There's no Buddha existing even when he's alive. So what to talk of existing after that? So it has relevance to that also. More from practical perspective, from our perspective, it has relevance in terms of what do we wish to identify ourselves with, and better not identify. In one case, you can say identify with body. In another case, you can say we identify with the consciousness. So both of them are kind of ditthis, wrong views. I had a question. इसमें शुरू में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मल्लाह लोग थे उन्होंने जब बुद्ध को ग्रीट किया तो they encircled him keeping Buddha on his right. जी. And similarly जब जाते हुए उन्होंने यही किया. तो क्या ये उस समय का ऐसा ट्रेडिशन था और क्या should we also follow it when greeting monks and taking their leave? This is a typical Indian tradition. जब आप किसी मंदिर में जाते हैं अभी भी आप गए हों कभी, you always do the circumambulation of the deity. Okay. So this is a typical tradition. And so should we also follow it when greeting or taking leave of monks? It's not I think that Bhante ji should answer. So Darshan, you might get some, yeah, I don't know. I think जो monastic etiquette है, in my experience, ये बहुत ज़्यादा culturally conditioned अब हो गया है. So I haven't seen something like this happen in the cultural context in which I have spent the last 4 years. But it's quite likely it might be happening somewhere else. So typically, जो Thai cultural context है, उसमें it's actually very interesting. People insist on lowering themselves in front of a monk. So it's actually very peculiar for somebody like me who's grown up here, जहाँ हमारे लिए respect जाहिर करने का तरीका खड़े होने का है. And the Thais are sitting down all the time. So that's one aspect of how they behave in front of monks. And there are many other details. But I haven't really come across this one, at least in the Thai context. But it's actually very likely it's going on in some other context. And maybe since we have a big group, maybe if somebody has something to say about this, it might be helpful to know. Although it is really a question mostly just of behavior. So maybe we can also move ahead. Yeah, just a cultural aspect. लेकिन एक बात, जब हम गए थे अजान जीविकों के साथ यमुनानगर कहाँ गए थे, सिद्धार्थ को जहाँ मिले थे, वहां पर वो जो स्टैचू भगवान बुद्ध का वो था, तो वहां तो उन्होंने चैंटिंग करते करते ही है ना, नहीं तो कह रहे ना इनमें नहीं, भिक्षु का नहीं करते ना, वो कह रहे हैं भिक्षुओं का करते हैं. अच्छा, भिक्षुओं का. In terms of statues, in terms of chaitya, we do circumambulation in the right way direction, in the clockwise direction. So भिक्षु का कह रहा, भिक्षु.
I think we could go ahead with that now. Okay, so just staying on this the Kalyan Mitra theme, इसकी हमने पहले भी बात की थी. So I think it might be helpful to propose this caution कि ये जो कल्याण मित्र का जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल है, उसका तात्पर्य is not जिस तरीके से हम मित्र शब्द को सामान्य हिंदी में आजकल समझते हैं. इसका तात्पर्य बहुत स्पेसिफिकली एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि मुझे धर्म में गाइड कर सके, which means कि वो नेसेसरली उस व्यक्ति में कई क्वालिटीज ऐसी हों जो कि सूत्रों में अलग अलग जगहों पर डिस्क्राइब की गई हैं, कल्याण मित्र की क्वालिटीज. और मुझे याद है एक बार Dhar Sahib has compiled these and there are 34 very profound qualities across the sutras of a Kalyan Mitra. So basically ये एक सामान्य प्रकार से जो हमारे मित्र होते हैं जिनसे हमारी एक डे टू डे इंटरेक्शन होता है, उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि बहुत स्पेसिफिकली जिस चीज़ को हम अंग्रेजी में टीचर कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ये उसकी बात हो रही है. So it's probably something useful to remember. और जैसा धर साहब ने अभी हमें बताया कि ये क्वालिटीज साथ जाती हैं कि मुझे एक्सेस हो ऐसे टीचर्स का, या मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड हूं जो कि मुझे धर्म में गाइड करने में सक्षम है, लेकिन उनकी गाइडेंस का मैं फायदा उठा पाऊं वो इस बात पे निर्भर है कि मैं हाउ इजी और हार्ड आई एम टू एडमोनिश, क्वाइट ऑब्वियसली. तो यदि वो सरेंडर की भावना है तो ही मैं उस टीचर का, उस कल्याण मित्र का, उस गाइड का, उस मेंटर का पूरी तरीके से फायदा उठा पाऊंगा. सो आई थिंक इन दैट सेंस ये जो दो पेयर्स हैं उनका काफी यहाँ पर सिग्निफिकेंस है. ओके, मूविंग ऑन. स्किल इन नोइंग ऑफेंसेस, स्किल इन प्रोसीजर फॉर रिहेबिलिटेशन. इसमें वेरी ब्रीफली आई कैन शेयर कि जो थेरावाडन भिक्षु संघ है, जो थेरावाड विनय है, उसमें बड़ा क्लियर प्रोसीजर इस बात के लिए लेड आउट है. और इंटरेस्टिंगली ये प्रोसीजर एक्चुअली गृहस्थ भी बिल्कुल लगभग उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं. तो जो पहला बिंदु है स्किल इन नोइंग ऑफेंसेस, वो इसेंशियली इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि क्या मेरी जो अपने मोटिवेशंस हैं, जो मेरी इंटेंशंस हैं, मेरी उसकी तरफ कितनी अलर्टनेस है. सो एम आई एबल टू डिटेक्ट कि मैं किसी चीज को अगर मौखिक या शारीरिक तरीके से कर रहा हूं तो उसके पीछे व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट. एंड इफ देयर इज even a mildly negative motivation, then in a sense that would be considered an offense for myself. और फिर रिहेबिलिटेशन का बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसा कि आप में से कई लोगों को पता है, हमारे यहाँ हर 15 दिन जो उपोषित होती है उसमें कम्युनल पाटिमोख की रेसिटेशन होती है, और उससे पहले ये विशुद्धि का एक प्रोसेस है जिसमें कि उस दौरान जो आपके ऑफेंसेस होते हैं उसको आप कन्फेस करते हैं अपने एक साथी भिक्षु के साथ. और वो जो कन्फेशन का एक चैंट है, एक फॉर्मूला है, उसमें आप उसको कन्फेस करते हैं और फिर वो दूसरा आपको ये सलाह देता है कि आगे से और सतर्क रहिएगा, एंड देन यू प्रॉमिस या आई विल ट्राई एंड बी इवन मोर केयरफुल इन द फ्यूचर. सो ये पाया गया है कि इस तरीके का जो एक कन्फेशन का तरीका है वो बहुत हद तक मन से किसी भी ऐसी चीज का जो कि मन पे भारी पड़ती है, जिसकी चिंता हमें सताती है इन वन सेंस, उससे बहुत हद तक मुक्ति मिलती है. और क्योंकि एक और व्यक्ति इस बात को अब जानता है तो एक तरीके से, एक साइकोलॉजिकल तरीके से, एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, एक साइकोलॉजिकल तरीके से एक प्रोटेक्शन बन जाता है उसी चीज को दोबारा दोहराने का. सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ स्किल इन नोइंग ऑफेंसेस एंड द प्रोसीजर फॉर रिहेबिलिटेशन. स्किल इन मेडिटेशन, प्लीज. पंडित जी, ये विनय का पाठ है ना, ये सब जो आप अभी बता रहे थे? That's right. So it is technically there, but
आपकी आवाज नहीं आ रही. But it's similarly usable. I mean, I know people who actually do take recourse to it. And like I described, कि एक psychological sense में it's super helpful. First of all, in relieving the, the sense of whatever, shame, guilt, whatever it is, that's one. And then creating this protection in repeating it in the future. So yes, you're right. Technically, it is a part of the bhikkhu patimokh, and but also just equally applicable for anyone basically. इस context में मेरा एक और सवाल था कि जैसे आप लोगों का धम्मा विनय है for the bhikkhus, is there some guidance for the layman on this? Is there a Dhamma Vinaya counterpart for the layman? So the most basic framework is of course the 5 precepts, और फिर वो और refine हो जाते हैं into 8 precepts. So और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भिक्खु पटिमोक्ष है, जो 227 rules हैं, if you see carefully, basically वो इन्हीं fundamentally जो 5 शील हैं, वो उन 5 शील को विशुद्ध करने का, सुदृढ़ करने का एक तरीका है. So it's basically just helping you keep those 5 shields in place. That's essentially what the 227 are. जो मुख्य पाटिमोक्ष हैं. और एक्चुअली तो जो भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम हैं वो दे रन इनटू थाउजेंड्स, क्योंकि छोटे छोटे बिहेवियरल नियम बहुत सारे हैं. बट फंडामेंटली वो हमारी सहायता करते हैं कि जो 5 मुख्य शील हैं वो उनका उल्लंघन ना हो, वो प्रोग्रेसिवली और रिफाइन होते जाएं. और आपको याद होगा हमने पहले ये डिस्कशन किया था कि 5 शील इन एक्सप्लिसिट टर्म्स तो वही हैं जैसे लिखे गए हैं, बट विद इन ईच there is a very wide range. So the first thing with respect to killing, for example, can actually be refined to a great extent, extending it to all sentient beings, not just human beings. And for example, extending it to not just killing, but any sort of physical harm. So अगर आप भिक्षु नियम देखेंगे वो actually उस दिशा में जा रहे हैं कि 5 शीलों की एक very significant विशुद्धि होने में सहायता करती हैं. So basically, in a sense, for all human beings, the suggestion is actually the same. वो जो मूल 5 शील हैं वही हम सभी के लिए हैं, और monks के लिए वो उन चीजों को करने के लिए एक बड़ा अच्छा ये framework दिया गया है जिसको कि हम विनय कहते हैं. So that's basically how I understand it. Darsa, would you like to add something? There are many suttas also in which the Buddha advises, for example, in Lambalati ka Rahulvada Sutta, 7 साल के बच्चा उसको कह रहे हैं कि अगर तुझसे you should reflect upon your actions, and if you find you've done something wrong, you should go and confess to an elder and then take a vow you will not repeat it. So that's the standard formula recommended for reducing the remorse, जो हमारा एक निवरण है साधना में, कि जो remorse जो है उद्धच कुक्कुच में जो कुक्कुच वाला पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि अगर आप साधना करते हुए देखते हैं कोई बात गलती हो गई और बार बार आ रही है तो उसको जाके कहीं कन्फेस कर दीजिए. And refinement, obviously, जैसे आपने कहा, refinement is always possible. एक तो त्रिविध रिफाइनमेंट तो हर एक कई जगह वो कही जाती है कि हर एक शील को त्रिविध शुद्ध करना है. I will not do that wrong action. I will not approve of anybody doing the wrong action. I will not encourage anybody. तो 5 into 3 तो ऐसे हो गया. Then सम्मा वाचा के कई सारे subsequent details हैं. So we, in fact, when we recite it in, so for example, in the Dhammika Sutta, that becomes 10. Then we can extend it to covetousness, ill will. So many things that get added up. So basically, it depends on one's own insight to what extent one can really refine it. It comes even to the trees. You can't cut. Even to the trees, you're not supposed to cut them. Thank you. Okay, so
going forward. Skill in meditative attainments and skill in emerging from these attainments. So I was looking at some literature on this, or it's very interesting. Skill in meditative attainments का एक बिंदु जो commentaries में दिया गया है, that is in terms of suitability in food and climate. So it seems to me to be a technical thing, and maybe I'll request Dharsab to come in, but it seems to be a technical thing on reaching absorptions, and of course in how you come out of them, setting a predetermined time. So it seems to be something like that as far as I can tell. Yeah, that's true. आप इस सूत्र में हमने ऊपर पढ़ा होगा कि भगवान लेट गए determining the time when he was to get up. So that's the standard phrase. So it means we have got so much dexterity and control over the mind that we can determine, and then the mind will obey accordingly. And we know when we practice for a long time continuously, mind does become so supple that it just behaves exactly as the intention arises. You don't even have to say. As the intention arises, the mind will behave. So that is only an indicator of the possibilities of concentration levels. I think that should be enough for our cells. Okay, skill in knowing 18 elements and in paying attention to them. Dhatu kushalta, mansikar kushalta. So it's quite interesting. यहाँ जो कुशलता का तात्पर्य है, as far as this commentarial literature जो मेरे पास है, कुशलता को define किया गया है in terms of insight. Insight through, अब ये मैं actual quote पढ़ रहा हूँ. Insight through understanding, research, search, searching the doctrine, discernment, discrimination, differentiation, erudition, proficiency, subtlety, reflection, analysis, breadth, sagacity, intuition, and बहुत सारे इसमें और synonyms दिए गए हैं. और दूसरा जो कुशलता की परिभाषा इसमें दी गई है वो ये है, skill in oral traditions through acquisition, attention, hearing, remembering, and discrimination. So as far as I can determine, ये basically हमें insight develop करने के लिए क्या क्या चीजें करना आवश्यक है, क्या उसके foundations हैं, उसके बारे में it is giving us information about those points. इसके बाद है आयतन कुशलता. So these are things we understand. और dependent origination, आयतन जो sense basis हैं और जो dependent origination का doctrine है, इनके बारे में skill in understanding these and then working with these. So again, we'll probably not spend time there. इनकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कई बार. The next is, I'm just trying to see if Dharsab's copy is the same as mine. Okay. The next is skill in what is possible and skill in what is impossible. Okay, so commentarial literature I have says that these are supposed to be the powers of a Buddha. And so my own inclination is to actually not spend too much time on them, because from a direct practice point of view, or from the point of view of those points जो कि हम बहुत ज़्यादा discuss नहीं करते, it's probably not so helpful. Unless Dharsab, you want to say something about these, please? I'd just like to mention about all these kushalta. They're essentially deeper insights through pariyatti, understanding things properly. What are the various dhatus? What are the various ayatans? And then having the attentiveness and sati to the extent that you can actually in practice discern them. कि ये धातु है, पृथ्वी धातु है, कि अग्नि धातु है, कि ये चक्षु है, कि ये रूप है, कि ये चक्षु विज्ञान है, and so on. So that's and similarly ayatan क्या होते हैं. So one knows them, and then he's adept. Kushal होता है, adept. He's adept in understanding and dissecting each one of them separately. जो skill in what is possible and impossible has some bearing on can have some bearing, because it refers to what is possible for a Arya to do and not do.
For example, in Ratan Sutta, we read that Sotapanna can never do any of the 6 heinous deeds. He'll never do them. So if you're still tempted in that direction, it means we have still a lot of work to do. And if he commits a mistake, he will not conceal it. And that's a very practical kind of injunction. The qualities of the Aryas, which tell us what they will do and what they will never do. Those kind of things, for example, an Arya will never break any of the precepts. So then we know that a path towards that is through this route. So in that sense, it has some semblance of practice. Sir, can you also elaborate on the six heinous deeds which a stream enterer can never do? They are the ones, for example, killing mother, father, killing an arhat, injuring a Buddha, creating schism in the Sangha. These are he is kind of, kya ghor karm kha jata hai, which lead to perdition for a long time. Similarly, for the next point, I really looked and I couldn't find too much elaboration. So maybe if you have something on that, then I'd very much request you to mention. Straightforwardness. Straightforwardness, we always come na, is one of the qualities mentioned in the Mangala Sutta also. Uju Chitta, one should have a straight chitta. It should not be crooked and deceptive in mind. And Lajja Vancha means, Lajja to Hindi ke shabd hai, he should be modest and he should not immodestly dress or eat or do any activity of that kind. And Sorachanya is gentleness. One should be gentle, which is in some sense related to the lack of pride and lack of sense of, and in some sense related to the humility, because humility generally results in gentleness. These are the qualities which one should know, and all of them being wholesome, we need to practice and check up whether we have them or not have them, in the sense of Samma Vayama. Okay. So similarly, जो इसके बाद वाले points हैं, they are more in terms of the straightforward meaning of those words. The next is friendliness and hospitality. Harmlessness को अहिंसा की हमने काफी discussion की है. Purity. Okay. So जो next point है, just almost at the bottom of the page. So maybe we can just go briefly into purity, or the way it's defined. So it's defined in many different ways, but mostly in terms of purity of morality, virtue, purity of mind, purity of view. So that's really how it's defined. And how I understand it is कि जैसे कि थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि क्या जो बेसिक शील हैं उसकी तरफ मेरा प्रोग्रेसिवली एक एटीट्यूड ऐसा है कि उनको मैं प्रोग्रेसिवली रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रोग्रेसिवली मैं उनको आई एम एबल टू सी द सटलिटीज ऑफ द डिफरेंट five precepts. At least that's how I have understood it. Similarly, Dharsab, can I request you? Would you like? इसमें रट विनीत सुत्त का जिक्र किया गया है. But that seems to be a super technical point. ये जो सोचे इंचा है ना, प्योरिटी वाली जो बात है, purity is quite often, depends on who is talking about it, but and there is a famous sutta, Ratha Vinita Sutta, where 7 stages of purity are mentioned. So in some context, this word is used for those 7 stages of purity, which means starting from Shil Vishuddhi, then Ditthi Vishuddhi, Māgha Vishuddhi, Kankha Vitran Vishuddhi, and so on. I don't remember all 7 of them. So they are basically the gradations of purity. So Ratha Vinita Sutta काफी इस context में quote किया जाता है.
Right. So that's what I found, but it seemed to me that was a highly technical discussion उस context में. So I was जैसे मुझे जैसा समझ आया, maybe dealing with Sheel is perhaps really from our point of view the most useful way to see this. Yeah, surely. What is interesting Okay. Patisantharu. Hospitality is also included as and Venerable Sariputta was known to be extremely hospitable. So visitors would come and he would look after them, and then Ananda would look after them, and they had kind of that attitude of being very hospitable to the people who visited the monasteries. Yeah, thanks for mentioning that, Dharsab. In fact, yeah, please go on. That's okay. मेरा भी यही that was really my experience. ये जो 4 साल में थाईलैंड में रहा कि actually वहाँ जब monks एक monastery से दूसरी monastery जाते हैं तो जिस तरह की treatment होती है, it's really actually super extremely touching और बहुत it's really you can see कि ये जो भाव है वो बहुत एक तरीके से कूट कर भरा गया है. So yeah, thanks for mentioning that. Sati Sampajanya is something we've discussed quite a lot. Not guarding the sense door and guarding the sense doors, again it's something जो हमारे चर्चा में कई बार आया है. But maybe guarding the sense doors का जो point है, शायद it's important to underline it. और जो भोजन में मतन्यता है, knowing the right amount, कि हमारे ट्रेडिशन में खास करके लुम्पोर लियम जो है वो एक्चुअली दोनों बिंदुओं को बहुत अंडरलाइन करते हैं कि अगर हमें धर्म में प्रगति चाहिए, देन एक तरफ तो शील हैं जो कि बिल्कुल दे आर नॉन नेगोशिएबल, बट उनका पालन करने के लिए भी गार्डिंग द सेंस डोर्स एक प्री रिक्विजिट है. और जो भोजन में मतन्यता है वो भी एक तरीके से ही defines it as one of the issues of how you deal with your senses. So for Lumpur Liam particularly, ये जो बिंदु है guarding the sense doors का, this comes up in his post meal ovadas very very frequently, and his point is that जो virtue की purity है, शीलों की purity है, वो बहुत हद तक किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को अनरिस्ट्रेन्ड ऑपरेट करने देते हैं या उनको हम बिल्कुल एक तरीके से बांध के रखते हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है. Power of reflection and the power of development. So clearly across the sutta, across several suttas, ये जो issue of reflection है वो बार बार आता है. और there is actually some technical definition of this as well, जो कि मैं अब पढ़ के सुनाता हूँ. And what is the power of reflection? Here someone reflects thus: bodily, verbal and mental misconduct has bad result in the present life and in the future life. Having reflected thus, he abandons bodily, verbal and mental misconduct and develops bodily, verbal and mental good conduct. He maintains himself in purity. This is called the power of reflection. And what is the power of development? So it seems technically 3 प्रकार के developments बताए हैं. एक तो खैर बहुत significant, which we already know obviously, is in terms of the development of the bhujangas. उनका जिक्र किया गया है. And then there is something called the power of development, is the power of trainees. Those of us who are depending on training to abandon greed, hatred and delusion. एक ये definition है. और जो तीसरी development की definition है, that is in terms of developing seclusion from sensual pleasures, from unwholesome states, and so on and so forth. So basically ये jhanas की इसमें बात हो रही है. So development का इन 3 तरीकों से definition है, and reflection of course is in terms of consequences of one's action
in this life and in the future life. So this is of course the technicality. लेकिन कई जैसे कि हमारे teachers ने और धर साहब बार-बार हमें encourage करते हैं to really reflect about our experiences through the lens of the Buddha's teaching. So we thought it's significant to just underline this. क्योंकि कई बार ये आता है कई चर्चाओं में आता है कि really what is reflection and isn't it buddhi vilas and things like that. So I think in the context of that misunderstanding कि जो बुद्धा की teaching है that is formulaic and doesn't involve thinking, you can actually see here Sariputta very specifically encouraging monks to develop the power of reflection and the power of development. Okay, going forward, again, ये बिंदु हमने कई बार discuss किए हैं. Sati का बल. Sorry, there's some. Please, yes. Mention about this. Firstly, these are interestingly called as bala. Normally, we talk of 5 indriyas and 5 balas. They are not there. They are something additional. दूसरी बात जो पटिसंखान reflection की बात है, ये actually, if you study the suttas and it is widespread. Only thing is the word used is different. There is a word used, paccavekkhati, which directly means reflection actually. And in the Ambalattika Rahulavada Sutta, Buddha keeps on telling him, paccavekkhati, paccavekkhati. You should always reflect when you do an action, before you do an action, before doing an action, while doing an action, at the end of doing an action. And not only that, he says, all the seekers of the past, seekers of the present, seekers of the future, who have purified their mind, they have done it by this way only and no other way. So it's a very powerful statement, which I think that statement itself needs a reflection by us. What is he saying? He says that all the seekers in the past, future and present, there's no other way of purifying the mind other than this kind of reflection. Then there is another dimension which comes in the terms of patisanchikkati. You find that in, for example, among the suttas which you have studied, वो जो है गिरिमानंद सुत्ता, तो उसमें अनिच्छ संज्ञा कैसे डेवलप होती है? पटिसंचिक्खति. A bhikkhu goes to forest and shunyagara and then iti patisanchikkati rupam aniccam vedana anicca sanya anicca, which means he's constantly reflecting on that in the light of his own experience. So that is he's sitting below a tree and he's reflecting on that. Similarly, in terms of anatta lakhan, anatta, again it's same thing. Pratipati sanchikkati, rupam anatta, vedana. It means he's constantly reflecting on the basis of his experience that this is the characteristic and that's how anicca sanya is developed. This is how anatta sanya is developed. So it's very clearly here. So in many suttas, these words are found. If you see check for these words in the Sutta Central, you find a huge number of suttas where these words are there. Sir, एक और क्वेश्चन था कि भावना बल. So it seems like यहाँ पे जो भी कुछ बात हो रही है तो भावना ही की बात हो रही है. फिर ये अलग से क्यों बोला गया है? Yeah, bhavana in terms of the meditative practice. Bhavana bal here means in terms of meditative practice. जैसे आप अगर if you remember the sutta, wherever the word bhavati, bahulikati वो आता है, that bhavana that is the word reference. So bhavati comes in 7 bhujangas and indirectly it comes in 4 jhanas. So wherever you have to meditative practice to develop certain good qualities, उसको भावना कहा जाता है. इसी जैसे कहा जाता है कि परियति सुतमयी पन्या, चिंतामयी पन्या and bhavanamayi panya. So bhavanamayi means you first hear, then you reflect on it, understand it intellectually, and then you put it into practice. So bhavana is practice. It could be meditative practice, it could be any other practice by which you actually practice the teachings. तो वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस है वो अपने में सबसे बड़ा बल है. Thank you. So, Darsab, if I may play the devil's advocate,
2 or 3 questions come up इसके context में, reflection के context में, and of course कई बार ये सवाल पहले भी हमारे इसमें आया है कि what's the difference between the way reflection you just described it and thinking? Is it thinking? That's the first question. There are different levels. It is partly thinking, partly it is thinking, but it is thinking based on experience, based on your understanding. So you see that Rupam is anicca, you understand it on the basis of experience, and similarly for all others. And then you repeatedly reflect upon it in variety of ways, variety of experiences, so that it gets ingrained. That's the whole idea. Just once you know it is not sufficient. तो इसलिए कहा जाता है कि बार बार हमको उसको रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए जब तक कि वो हमारी संज्ञा का पार्ट जो है बन जाए, संज्ञा हमारी उस तरह की हो जाए, अनित्य संज्ञा या अनत्त संज्ञा, whatever. So that's the whole idea of it is, you develop the perception, you change your perceptions by repeatedly reflecting on the facts of your experience. So that is the basic idea of reflection. But obviously thinking is involved. Actually, if you see very subtly, thinking is involved even in Satipatthana. Thinking is involved even in understanding anicca. How will you understand anicca? When you say, supposing you're doing only body scan, you actually see the thing arising and changing. So that changing is noticed and that changing is interpreted as anicca. So there is an elemental level of inference being done. Inference is also thinking. अच्छा ये बदल गया, अच्छा ये है, अच्छा अब ये arise हुआ है, अच्छा अब ये स्थित है, अब ये जा रहा है. So you are actually observing and inferring from there something. So that all that is in a very minuscule sense, it is of that kind. So then the notion that thinking is not part of vipassana or part of insight or part of meditation is actually wrong view, Darshan? Yeah, that's not born by teaching. I will put it like that. That's not born by the teachings of the Buddha. Otherwise, there's no point in Buddha giving a talk on Anitta Lakkhana Sutta, because what do you think? Is Rupa anicca or anicca? What is anicca? Is it so dukkha or sukha? If it is dukkha, if it is anicca, is it right to think that it is yourself? Why do that? Why do all that, such a long discourse and discussions and ask questions and answers, and then obviously those questions and answers are meant to reflect and get an answer, so as to develop an understanding. Sir, I have a question. Ji. Yeah, I'm audible. हाँ, बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है. तो जो सूत्र एक है कलाम सूत्र, उसमें एक लाइन है, डोंट गो बाय लॉजिकल कंजेक्चर. सो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही है फिर बुद्धा ने, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि only by logical conjecture? इसका मतलब ये नहीं कि you have to be illogical. It means only because it is appearing to logically doesn't mean that it is right. You have to verify it from your experience. The whole idea there is verify it. If you know by direct experience, and it is praised by the wise, so you should not forget that. कई बार हम उसको ऐसा कह देते हैं कि मेरी जितनी समझ है मैं तो ऐसे ही करूंगा, इसका मतलब यही ठीक है. ऐसा नहीं है. कलाम सत्य का वो लाइन बड़ी कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं. And it is praised by the wise, then you follow that teaching and do that, not otherwise. So, because your experience can also deceive you. You see, experience is not infallible, because how you interpret experience depends on whether one is wise or not wise. So experience को ही
फाइनल आर्बिट्रेटर बनना भी sufficient नहीं है, whether it is within the paradigm of Buddhism, because you can see many people in the जो सामान्य हम जीवन जीते आ रहे थे पहले, उसमें भी तुम्हारा एक्सपीरियंस था कि ऐसा ऐसा करने से खुशी मिलती है, ऐसा ऐसा करने से दुख, ये तो हमारा एक्सपीरियंस ही लगता है ना, इसने मुझे ऐसा कह दिया मुझे दुख हो गया, तो एक्सपीरियंस ही है। आप उस एक्सपीरियंस को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? एक्सपीरियंस तो यही है ना कि उसने मुझे मेरी चीज चुरा ली तो मुझे दुख हो गया, या उसने मुझे गाली दे दी तो मुझे दुख हो गया। एक्सपीरियंस तो यही कहता है। सो वी हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द एक्सपीरियंस, टू बी एबल टू सी वो दुख उसके शब्दों के कारण नहीं हुआ, मेरे भीतर जो अपनी सेल्फ इमेज बनी है वो टूट गई, ये दुआ। सो दिस इज ए deeper reflection which will come only when you associate with the wise. Otherwise पता ही नहीं चलता था, है ना? ये आप हम अपने अनुभव से देख जानते हैं ना, साधना में आने से पहले और ठीक से समझना के पहले यही भाव रहता था, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे देखो मेरे को बुरा भला कह दिया, मुझे गुस्सा आ गया, आना ही था, ये तो बुरा बात है, तो मेरे दुख का कारण तो यही है। It's a very fundamental point, which is needed for all our practice. साधना में एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए ये फंडामेंटल पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, और वो हम इट इज नॉट इजीली डिसर्नेबल अनलेस यू हैव अ कल्याण मित्र टू एक्सप्लेन, अरे ऐसा है भाई, नहीं तो तुम गलती महसूस करते रहो, सारी दुनिया को ही बदलते रह जाओगे। गैलेक्सी दरअसल जी छोटा सा मेरे को समझना है जी कि रिफ्लेक्स, हाउ द रिफ्लेक्शन इज डन, एंड डू वी आल्सो ऑब्जर्व सेंसेशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन? If it happens naturally, fine, there's no harm. But if it doesn't happen, it's not necessary. What is the idea? क्या है हमारा? हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया है एनालिटिकल थिंकिंग, प्रज्ञा बनाना। विपश्यना का मतलब होता है एनालिटिकल थिंकिंग, सो दैट वी कैन सी दीज। जैसे अभी हमने देखा धातु कुशलता, सलायतन कुशलता, तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे हम देखेंगे और उसको समझेंगे क्या है, कि अनुभव क्या है, ये अनुभव क्या बता रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो अनुभव को हम एक ब्लाइंड मैकेनिकल तरीके से अनुभव हो रहा है, जान रहे हैं, we will not be able to penetrate into the nature four noble truths. Every experience has to be penetrated according to four noble truths, अगर हमको चार आर्य सत्यों का पैराडाइम फॉलो करना है। आप देखेंगे हर परिस्थिति में भगवान ये कहते हैं कि कोई अनहोलसम क्वालिटी हमको ड्रॉप करनी है तो उसका तरीका यही है, 8 फोल्ड नोबल पाथ। तो 4 noble truths का बेसिक आइडिया क्या है? That we reflect on, we understand suffering, and how we understand suffering, there the reflection is of a experiential kind of reflection, which means we know what has happened, कैसा हमारा दुख हुआ, and then we sit with it, we observe our body, observe our mind, and then let the mind calm down and cool down till the truth becomes evident. वो ट्रुथ तभी एविडेंट होगी जब हमें वो मालूम है कि कोई दुख का कारण एक तृष्णा है, तो हम वेट करते हैं कि क्या तृष्णा है जो हमारे दुख का कारण बनी थी, ताकि हम उसको ड्रॉप कर सकें। अगर हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा तृष्णा क्या थी तो क्या किसको ड्रॉप करेंगे? तो ये मैकेनिकल साधना करने में ये कमी रह जाती है कि मालूम ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं इस दृष्टि से पूछना चाहता था कि एक तो बात ये हम सोचते रहे सोचना नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, सोचना नहीं है, अपने अनुभव से सीखना है और आइडेंटिफाई करना है ये क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। अगर ये बात जैसे आप उदाहरण दे ना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, वो मुझे देखना है, समझना है। अगर मैंने किसी पे गुस्सा कर दिया तो देन आई रिफ्लेक्ट, अच्छा एक तो बात ये कि गुस्सा किया और मुझे दुख हो रहा है, अभी भी दुख हो रहा है, सो आई लर्न, सी गुस्सा करने से दुख होता है। ये जो थिंकिंग नहीं है, एक्चुअल एक्सपीरियंस है। हम एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं।
सफरिंग हैज टू बी अंडरस्टूड। दुख का जो सफरिंग है, जो गुस्से की सफरिंग है, उसको समझना है। कैसे समझेंगे? अनुभव हो रहा है हमको, उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, चित्त को शांत करेंगे उस अनुभव के रहते रहते ही, ताकि सत्य सामने आए कि ये कमी है, ये तृष्णा है जिसके कारण गुस्सा आया था, और फिर हम उस तृष्णा को छोड़ दें। ये एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन का तरीका है। दूसरा रिफ्लेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग, कन्वर्टिंग चिंतामयी पन्या इनटू भावनामयी पन्या। आपने बुद्धि के स्तर पे समझ लिया, अब आप उसको अनुभव के उत्तर पे उतार रहे हैं। रूपम अनित्यम, कैसे अनित्य है भाई? अच्छा, हम अनुभव करके देखते हैं। सो वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट। वेदना अनित्यम, उसको देख रहे हैं कैसे हो, कहाँ की वेदना होती है, आंख पे हो रही है, नाक पे हो रही है, एंड वी सी द होल डायमेंशंस ऑफ एक्सपीरियंस। रूपम अनत्ता, देन वी रिफ्लेक्ट ऑन इट। क्यों भाई अनत्ता क्यों नहीं है? किसका है? मेरा नहीं है तो किसका है? देन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, यू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, यू थिंक अबाउट इट। मेरा नहीं है तो किसका है भाई? यू आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ताकि जो मन में एक अविद्या बनी रहती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, वो सारी टूट टूट के हट जाए, एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ, नहीं तो अनात्म बोध, अनित्य बोध सचमुच में पुष्टि नहीं होगा कभी भी। हम बात ही कहते रह जाते हैं। तो उसी के लिए एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन, विवेचना का मतलब ही एनालिटिकल। धम्म विचय, भगवान ने कहा ना, दूसरा जो बोधि का अंग है धम्म विचय। जो अनुभव हो रहा है उसको तोड़ तोड़ के देखना है और उसको समझना है, उसके उस समझ के आधार पे, ताकि एलिमेंटल लेवल पे अनुभव छोड़ सके और उसको अपने से आइडेंटिफाई करना छोड़ सके, नहीं तो नहीं छूटेगा। तो ये कई अनगिनत सूत्रों में भगवान ऐसा समझाते हैं कैसे करना है, कैसे डेवलप करनी है नित्य संज्ञा, अनित्य संज्ञा, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सो मेनी टाइम्स। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने ये क्या डिफरेंस बताया था, पति संखन बल और पची व्यक्ति? नहीं, मैं कहा कि वो दे आर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर the परिसंखाना, परिचवेकति, परिसंचिक्खति। These are common words which are used under पच्चवेकति is direct reflection। जैसे मिरर के साथ जो इमेज आती है उसको पच्चवेकन कहते हैं। परिसंचिक्खति includes some more experiential understanding so that you can reflect on understanding। जैसे वो अनित्य संज्ञा में, अनत्य संज्ञा में, उसमें परिसंचिक्खति वर्ड यूज किया हुआ है। तो अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो सबके अंदर सेम ही मीनिंग होगा, but that's the kind of nuance when you understand, we try to reflect on the practice, क्या कह रहे हैं यहाँ पे और वहाँ में क्या फर्क हुआ, तो ऐसा महसूस होता है। जी, थैंक यू। Okay, so may I speak, please? That's all. जी समझ कही। In Satipatthana, dhatu manasikara. Yeah. Actually, what does it mean? Giving attention to the dhatus. For the purpose of? जो हमारा अनुभव है उसको तोड़ तोड़ के देखना, कि जो भी हमारा शरीर है, खासतौर पर शरीर की मान लीजिए, शरीर जो है जिसको हम अनुभव करते हैं वो बेसिकली 4 धातुओं का ही अनुभव होता है, उसके सिवा कोई अनुभव नहीं होता। तो अगर हम उसको उस सेंस में बार बार देखते हैं तो शरीर को धातुओं का ही समुच्चय मानते हैं, तो फिर उसको शरीर की जो कोहेरेंस है, जो एक सॉलिडिटी है, वो हमारे को उसका भ्रम हटने लगता है, क्योंकि सॉलिडिटी के कारण ही आत्मभाव जागता है कि ये फिक्स चीज है, एंटिटी फिक्स है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो अगर हम उसको उस सेंस में देखते हैं तो इसलिए उसके लिए जितना गहरा अनुभव हो और हम उसको सचमुच में शरीर को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख सकें तो और वो क्लियर होने की संभावना है। जरूरी नहीं कि हो जाएगा, अगर उसके साथ समझ लगाएंगे, उसको बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, तब जाके वो सचमुच में बात अंदर जाके घर करती है। बिकॉज इट्स सच ए मेजर चेंज इन अवर व्यू ना। सामान्य व्यू तो यही है कि यही तो है मैं, और सब हमको इसी से तो आइडेंटिफाई करते हैं,
शरीर से ही तो आइडेंटिफाई करता है। आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? शक्ल देख के तो कर रहे हैं, मैं भी आपको शक्ल देख के ही कर रहा हूँ। तो शरीर के प्रति हमारी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है, उसको तोड़ना काफी कठिन काम है. सो यू हैव टू रियली यूज वेरियस मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग इट अपार्ट. यू कैन यूज 5 आयतन वाला तो पूरे कॉम्प्लेक्स से है, या 5 खंडों का, 6 आयतनों का, 4 धातुओं का. सो मेनी वेरियस वेज वी ट्राई टू डू, जो जिसको उचित लगे वैसा करें. Finally, developing non-self. Yeah, that's right. That is. Thank you. Okay, so going forward, the next few points are pretty standard, जो कि हमने कई बार चर्चा की है. सती का बल, समाधि का बल, समथ और विपස්සना. और अगले 2 पॉइंट्स जो हैं वो निमित्त संबंधित हैं. जहां तक मुझे समझ आती है, ये these are more technical things to do with meditation. So, and we haven't marked them. So, Dharsab, unless you want to say something, I'll carry on. But it'll only confuse, so we'll leave it. You didn't put it, okay. Decided to not to discuss it. Okay, that's okay. Because different people have different understanding of Samadhi Nimitta. Vishuddhi Magga का एक understanding है, सुत्तों में कुछ और understanding है. So, it's left for each one to explore. Okay, going forward. Okay, pagaho, cha avikeppo. So, exertion or non-distraction इसको बताया गया है. And we thought it's significant, especially जो non-distraction वाला point है, that it seems to be emphasizing the need, in a sense, to really be able to apply oneself to a certain specific task in the context of Dhamma, or to Dhamma in general. Or we have some alternate translations, but actually I myself had one question, which is this really the factor of Chitta, जो कि basis of success में आता है? So I'm wondering अगर इस non-distraction को हम चित्त से correlate कर सकते हैं, इद्दीपा? Yeah. Bilkul. It is a part of, it could be seen as, interpreted as Chitta Iddhipada. So it's basically our really application on at whatever task we are working on, whether in Dhamma or even in life. Actually, if I need to do something, then I really need to in daily life. We know how much distraction happens. We start doing some task and we forget the original objective, end up doing something else. And thanks to internet and surfing, it's a common phenomenon. We end up so many times, कुछ सर्च कुछ कर रहे हैं, कुछ और दिख गया, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, and you forget. Mind got distracted totally. तो आजकल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को याद रखना. I can see it for myself also. You're doing something and suddenly something props up which you find is very topical or important in that limited sanya, and you get into it. So it seems to be a significant part of an arsenal in the modern context, especially from a Dhamma point of view, especially the distinction between important and urgent, और वो जो सारा दायरा है, particularly as a householder, Dharsab, you would suggest that not. For students, for example, now you have student in front of you, extremely important. For teachers who just teach, certain, in fact, in every profession, non-distraction is absolutely essential. सारी एफिशिएंसी हमारी कम इसीलिए हो जाती है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, बोर हो गए. बोर्डम इज ए बिग इशू. इट हैज इट्स रिलेशनशिप विद बोर्डम, एंड देन ऑब्वियसली एक्सर्शन इज नो लॉन्गर देयर.
if the mind is distracted, exertion तो छूट गया कहीं का कहीं. Antarji, Right. I think in the beginning you mentioned that Sariputta ji, Venerable Sariputta basically wanted all the bhikkhus to memorize these, right? And I think in those days and in that tradition, memorization is part of the whole learning process. पर आजकल के context में तो इसको memorize करना हमारे लिए तो impossible होगा. तो उसके लिए क्या advice है? हम तो सिर्फ रेफर कर, हमारे लिए मेमोरी है कि बुक में अवेलेबल है, जब मन करा तो देख लिया बस. But actually, I mean, I'm sure you would agree, Professor, that if you remember things, it is much better than. Of course. But I'm talking about the impossibility of it, seemingly impossibility of it. I mean, those who are young people, perhaps they can still memorize many things. That is true, but we can also try to the extent. That's why at least the italics portions we've said, try to put down as few as possible, which are not very commonly discussed. So we thought at least these italics we should really focus on. So they are all very beautiful points of summary. Yeah. But then memorizing them is another. We can keep them in hand, whatever we like. That's true. Depends on the state at our age. If you start at this age, difficult. But if, for example, these chantings which we do again and again, they do get memorized because they are Shraddha, so they automatically get memorized. That is one of the objectives of chanting, I think. So this also, that's why he puts it as a chanting. So that you should, when you chant it again and again and again, it will become, quite a bit of it will become memorized. And we can see in our senior bhikkhus chanting whole of the parittas, all of them, 20 of them, one go. So when Jan Suvedo is 87, he still remembers all of those. So it's a great inspiration to see that really. Thank you. इनफैक्ट मेरा भी व्यक्तिगत रूप से यही एक्सपीरियंस रहा है. आई मीन एज सम ऑफ यू नो, जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि चैंटिंग, इट्स मेरा इसमें बहुत धीरे धीरे, काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी एफर्ट से कुछ दिलचस्पी पैदा हुई है. लेकिन मुझे भी जो इसेंशियल फ़ायदा महसूस हुआ यही हुआ है कि कई सारी जो टीचिंग्स हैं, दे हैव रियली बिकम अ पार्ट by just doing it repeatedly. या जैसे हमारे monasteries में लगभग वही चीज़ हर दिन होती है, so you're listening to it all the time. And मैं इस मौके का थोड़ा फ़ायदा एक सेल्स पिच के लिए भी उठाना चाहूँगा कि अब हम लोग यहाँ इंडिया में जो अपनी सारी चैंटिंग है, और जो चैंटिंग बुक इतनी मेहनत से धर साहब इज कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग इट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंसिस्टेंटली करें, एक तरीके से करें, एक पद्धति से करें, एक रेगुलरिटी से करें. तो जो लोग सारे वेनरेबल सारिपुत्र के इस एनकरेजमेंट को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी. सो प्लीज डू गेट इन टच विद मी, और हम लोग इसको सो एवरीबडी बेसिकली कैन टेक अप स्पेसिफिक टीचिंग्स जो कि हमारे चैंटिंग बुक में हैं. सो एटलीस्ट वो चीज़ जो कि मैं चैंट कर रहा हूँ, कम से कम वो मेरे अंदर पूरी तरीके से स्थापित हो जाती हैं. सो एटलीस्ट दैट मच आई कैन डू. सो एनकरेजिंग एवरीबडी हु इज लिसनिंग, इफ यूड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, देन प्लीज डू गेट इन टच. और एक मैं एक्चुअली और क्लैरिफाई कर दूं, कई बार हमें लगता है कि चैंटिंग का मतलब है कि मेरे में कोई मेलोडियस टैलेंट या कोई म्यूजिकल टैलेंट होना चाहिए. आई मीन दोज ऑफ यू हु नो मी, जो हमारे अजान केवली हैं, हमारे एबट जो कि खुद बहुत म्यूजिक में ट्रेंड हैं, वो आई एम हिज डिस्पेयर. So if I can do it, then probably anybody can, so really encouraging people to set aside ये धारणा कि इसके लिए कोई एक म्यूजिकल टैलेंट की आवश्यकता है. इसके लिए केवल exertion और non distraction की आवश्यकता है. It just takes some effort. That's pretty much what it is. In fact, I was please Harsa, please. And Shraddha.
Yeah, so my experience, as you know, has been that actually the Shraddha has come after it. So if somebody like me can develop Shraddha in chanting, then probably it's possible for anyone. That's true. Okay, moving onwards. Shila Vipatti, Dithi Vipatti, failure in ethics, failure in view, accomplishment in ethics, accomplishment in view. मेरे ख्याल से वो शब्द खुद ही उसको डिस्क्राइब कर देते हैं. इसी तरीके से जो नेक्स्ट वन इज टेकिंग इट फर्दर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शील एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ व्यू. यहाँ पे वी हैव पर्टिकुलरली मार्क्ड जो अगला वाला है, making effort in line with this view. So so we thought this was important क्योंकि एक धारणा कई बार हमारी बन जाती है कि बेसिकली हमें राइट व्यू स्थापित करना है, और एक बार हमें चीज खास करके इंटेलेक्चुअली समझ आ गई, then the job is done. So यहाँ पर it's perhaps quite important कि इस बात को हम अंडरलाइन करें और खुद समझें कि उसकी मानसिक रूप से एक समझ, दिमागी रूप से एक समझ एक चीज है, पर फिर उसको एक्चुअली हमारा जो आचरण है, जो हमारे हैबिट्स हैं, वो उस व्यू के अनुसार अडेप्ट हों, is perhaps a work of several is perhaps a lot of work. So इसलिए यहाँ जो वेनरेबल सारिपुत का एग्जॉर्टेशन है कि हम उस प्यूरिफाइड व्यू के लाइन में एफर्ट करें, वो एफर्ट इज व्हाट आई थिंक नीड्स, वी वुड लाइक टू अंडरलाइन हियर इन दिस पॉइंट. सो दैट्स द रीजन इट हैज बीन सिंगल्ड आउट इस बिंदु में. एक गलतफहमी ये भी हो जाती है कि हमें समझ आ गई बुद्धि से और हम मेडिटेशन करेंगे वो सब समझ आ जाएगा और पूरा हो जाएगा. ये एक बड़ी भारी गलतफहमी है कि हम आनापान करेंगे या बॉडी स्कैन करेंगे या ओपन अवेयरनेस करेंगे और ओपन अवेयरनेस से हमारी दिट्ठी जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी. ऐसा होता नहीं है. It has to be put into practice. That's the point being made. यथा दिट्ठिश्च पधानम. हमको अपने जीवन में वेट नहीं करनी है कि एक दिन वो मिरेकल होगा and we'll just become complete assimilation हो जाएगा. It will become slowly, gradually it will be assimilated by practice. अगर हम अनित्य बोध की बात करते हैं तो we have to understand, and whenever we forget it, we remember it. नहीं भाई ये भी अनित्य है. अनात्म बोध की बात करते हैं and we forget it, but we remember, oh, अनात्म की बात हम भूल गए, चलो. Why am I taking it personally? I keep on saying anatta, vedana anatta, sanya anatta, and then I'm going to take it personally. No, that should not be done. So these acts is a strong kind of, self suggestion or auto suggestion, whatever you call it. That's kind of self-correction actually. Because unless we put it into practice, it's not going to be, no miracle is going to happen. So, and obviously putting into practice is quite tough. To say the sanya is not mine and somebody is challenging it and then you want to hold on to it. It's such a tough job, but that's the way we really loosen our attachment. That's the way we really give up our grasp. So it's a very, in my very humble opinion, it's extremely important aspect, which is just covered in one simple line. And that's why he's put it separately. Otherwise, Ditti Vishuddhi has already come. Ditti Pati has already come. He's put it clearly. Ditti Vishuddhi khopan yatha Ditti Saccha Padhanam. Uske hisab se pradhan effort karna chahiye. Very important. And I know how difficult it is. I can definitely share. It just breaks you apart. When you see कि यार ये तो सारी कहानियां वहीं की वहीं रह गई. So Darsab, if I may do further advocacy of the devil,
ये प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, ये हमें ये स्कैनिंग ही तो प्रैक्टिस है, या ओपन अवेयरनेस ही तो प्रैक्टिस है, या आनापानसति तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं दिट्ठी के लाइन में, और क्या करें? That practice has to be supplemented by actual practice in the day-to-day life, because we are not engaged in the analytical meditation is going to happen, going to bear fruit only when we put it into practice. Actually, day-to-day life, in our behavior, in our interaction with the people, you know, that's of extremely great importance. Otherwise, if we remain in seclusion and want to work in that manner, fine. For samadhi, it is absolutely essential, no doubt. But for real development of panya and improvement in ditti, development of anicca sanya, dukkha sanya, anatma sanya, it has to be born in जहाँ पे युद्ध होना है वहां पे करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं. मेरा तो यह अनुभव रहा है. और अभी मुझे इतना कष्ट होता है जब सेल्फ से जागता है और उसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है. इट्स सो डिफिकल्ट टू से कि मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, बट नो, इट्स नॉट सर्टन. मे बी I should live in accordance with my own understanding and my own teaching and teaching of Dhamma. And then you know how much difficult it becomes. That is where the practice is. That is where the real practice is. You just begin to change, you begin to actually do the change. Though all those things are helpful in that direction. You know, the meditative practices are helpful so that we can live life accordingly. By themselves, meditating in seclusion for a long time, wonderful. Great joy, great peace. कोई कुछ नहीं कहने वाला मुझे, कोई कुछ करेगा नहीं, आराम से ध्यान कर रहा हूँ, बढ़िया ना. कमरे से बाहर निकला और पत्नी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, गार्ड ने कुछ कह दिया, you start realizing, अरे ये अनत्ता कहाँ गया? That's where the practice is really. So to rephrase, आप जिस चीज को प्रैक्टिस कह रहे हैं वो एक्चुअली इज नॉट जिस चीज को हम कन्वेंशनली मेडिटेशन डिफाइन करते हैं, बट आप ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनसैटिस्फैक्ट्रीनेस के, अनसर्टेनिटी के, इम्परमानेंस के, नॉट सेल्फ के, उनके अनुसार हम जीवन को जिए. दैट इज व्हाट यू आर नाउ calling practice. So maybe we use a different word for it so that it doesn't get mixed up. Yatha chapadhanam. This is a beautiful word. Yatha chapadhanam. जैसे आपकी सम्यक दृष्टि है, दिट्ठी विशुद्ध हो गई है, अगर आपकी दिव्य विशुद्ध हो गया है, आप सचमुच में मानते हैं कि there is no self, रूपम अनत्ता, वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, संखारा अनत्ता, विज्ञानम अनत्ता, सचमुच में आपको मान लीजिए आपकी साधना बहुत परफेक्ट हो गई है, तो भाई जीवन में उतरना चाहिए ना. नहीं उतर रहा है तो वहां प्रैक्टिस करनी है, वहीं तो है. तो हम जब लॉन्ग कोर्सेज में जाते थे तो गोयंका जी हमसे कहा भी करते थे, भाई ये हॉस्पिटल है, यहाँ ट्रीटमेंट होने आया, प्रैक्टिस तो वहां करोगे, यहाँ थोड़ा ना. और यहाँ तो तुम तैयारी करो, यार शार्पनिंग द एक्स. It's like sharpening the axe. Practices in the day-to-day life. That's where 24/7. That's where practice will be there. So कई बार लोग कहते थे एक शिविर हो गया, दूसरा कर लो 30 दिन का, फिर तीसरा कर. ये तो उसका स्टैंडर्ड आंसर होता था, हॉस्पिटल जो है क्योर हो गए बाद बाहर जाने के लिए होता है, हॉस्पिटल रहने के लिए नहीं होता कि आते जाओ और यहीं रह लो. बाहर जाओ भाई. That's it. यथा दिट्ठिस्य च पधानम, वैसा एफर्ट करना चाहिए. So we have a misunderstanding of practice. Then I would say that is only a training, sikkhapadam. That's why Anapanasati Sutta is full of that. Sikkhati, Sikkhati, Sikkhati. Sir, I am really grateful. We are grateful, Bhattaji and Darsab. I have some small doubt, sir. Doubt means question. Okay, purification of ethics and purification of view. How it and making an effort in the line with that.
kindly elaborate separately. नहीं, I'm just giving simple example ना. दिट्ठी का मतलब है कि दृष्टिकोण, ठीक है. सम्मा दिट्ठी का जो पहला एस्पेक्ट बताया जाता है, एक सिंपल सा लेते हैं, चलिए, वो अनंता भी छोड़ देते हैं. मेरे दुख का कारण मैं हूं. Period. Simple thing. First, it is the KG lesson and the final lesson, you can call it. तो जब मुझे परेशानी होती है, मुझे कोई कुछ कहता है, क्या मुझे याद रहता है कि मेरे दुख का कारण मैं हूं, वो नहीं है जिसने मुझे गाली दी. यथा दिट्ठिस च पदानम, उस दृष्टि के अनुकूल जीवन जिए. Period. Very simple thing. And then you can take it to other levels, so depending on where we are. It's a very basic level. And if we can do that, that itself will do so much transformation in our life. अगर हम अपने दुख का कारण अपने को मानने लगे, अपनी कमजोरियों को मानने लगे, rather than दूसरा, सारे संसार अगर यही इतनी सी बात मान जाए तो ट्रांसफॉर्म हो जाए, सारा संसार ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. So that is दिट्ठी के हिसाब से जो हमारा व्यू है, राइट व्यू है, उसके हिसाब से विशुद्ध दिट्ठी विशुद्ध हो गई और उसके हिसाब से जीवन जीना. That's it. That's the whole of the Dhamma. Nothing else is left. जब हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, उसको करता अभ्यास करना कि उसको कर पाए, और उसको न करने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए साधना करनी है. उसके लिए मन को साधना करनी है कि हमको ये हमसे हो नहीं रहा है, हम भूल जाते हैं, तो अभ्यास करना है ताकि न भूलें. सती का मतलब न भूलना भी है. हम ना भूलें इस बात को, इस छोटी सी बात को ना भूलें, निरंतर से निरंतर हमारे जीवन का एक अंग बन जाए. Then perfect, we'll be liberated. Don't grasp anything. भगवान की एक सिंगल लाइन टीचिंग है, nothing whatsoever should be grasped. कहते हैं यही कर लो, काफी है. आप देख लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस में लाकर देख लीजिए. जहां कहीं ग्रेस्पिंग को, रिमेम्बर है, भगवान ने कहा डोंट ग्रेस्प, छोड़ दो. इतना मुश्किल है, हालत खराब हो जाती है. बट इफ यू हैव अ रिफ्लेक्टिव माइंड, एंड देन वी सी, हाँ इस कारण से नहीं छूट रहा, देन वी वर्क ऑन दैट कारण. अच्छा, ये कारण है जिस कारण से मैं, भगवान की शिक्षा मेरे बस की नहीं है, ये सीधी एक लाइन की टीचिंग दे दी उन्होंने, सभ्य धम्मा नालम अभिनिवेश्या का, तो बस ये कर लो, इससे सब हो जाएगा. Exactly says that if you practice it, everything will happen. And so we have to practice that. For that, you don't need to sit in a quiet atmosphere. You need to practice it. You need to see where grasping arises and give it up. Thank you, sir. Okay. The next one is actually for me the most interesting of आज जो ये मैंने तैयारी की थी. So इसका इंग्लिश में पढ़ता हूँ. इंस्पिरेशन, संवेग जो है उसका पाली लेफ्ट में है. And making suitable effort when inspired by inspiring places. So many of us go to, Bodh Gaya and जो इतने सारे हमारे pilgrimage sites हैं. So Venerable Sariputta is exhorting us कि जब हम inspire हों, तो वही जो पिछला point था, उस inspiration का फिर we want to do something with it, and that doing is basically a lot of effort to then put that inspiration into place and actually be able to bring those things into our life, जो कि पिछले आधे घंटे 45 मिनट में धर साहब ने हमें अलग अलग बताई हैं, और जो फंडामेंटली सूत्रों में है, जो बुद्धा हमें बता रहे हैं. So to be able to actually use the fuel of inspiration, of samveg, of shraddha, to make those difficult choices, make those difficult decisions, make those difficult shifts in behavior, make those difficult shifts in conditioning, make those difficult shifts in perceptions, in sanya, make those difficult shifts in our
mental habits, sankhar. Most importantly, make those difficult shifts in being able to identify different feelings and being able to hold them. So for me personally, ये जो बिंदु है कि इंस्पिरेशन के बाद का एफर्ट, एंड एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग मैं इस पॉइंट को और आगे भी ले जाऊंगा कि ये केवल शायद इसको हमें इंस्पायरिंग प्लेसेस तक सीमित रखने की भी जरूरत नहीं है. हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बहुत कुछ होता है. मीटिंग अ कैरिज्मेटिक टीचर फॉर एग्जांपल, तो क्या उस इंस्पिरेशन का मैंने लाभ उठाया इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द एफर्ट बिहाइंड इट. सो हम लोग कई लोग रिट्रीट्स में एंड many of us have been to people that we find especially inspiring. So what did I do with that inspiration? So the issue of whole effort, जो कि पिछले point में धरसाब ने मैं बताया, Venerable Sariputta is really encouraging us in this point. So I think fundamentally the onus is being put on us as practitioners to really push and put in all the effort behind it, all the hard work it takes to convert inspiration and Shraddha into tangible shifts in those conditioned patterns that we have. Darsab, anything from your side on this? Okay, the next one. To be never content with skillful qualities and to never stop trying. So दोपहर में जब मैं इसको कर रहा था, शांत walked into the room and I was like really excited about this thing. Ki it seems like, so again I'll partly play the devil's advocate. It seems like it's an endless task. So अगर हम कह रहे हैं कि हम skillful qualities से कभी content ना हो, so then basically is it never going to finish? So I'll wait. I'll let Dharsab chime in. But as I understand it, essentially till जब तक कि हम irreversibly stream में पड़ नहीं जाते हैं, जो सोतापति फल है, जब तक वो हासिल नहीं हो जाता है, शायद कम से कम तब तक हमें हालांकि संतुष्टि का भी एक भूमिका है, स्पेशली इन अ वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट. एक सामान्य कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में संतुष्टि एक क्वालिटी है जो कि हमें कही जाती है डेवलप करने के लिए, लेकिन शायद एक धम्म संदर्भ में, धम्म के कॉन्टेक्स्ट में टू फॉरएवर हैव दिस कंटिन्यूअस एस्पिरेशन टू कीप बिल्डिंग further qualities and to never stop trying. So ये सारे जो पिछले 2-3 बिंदु हैं, ये सब हमें increased effort की तरफ encourage कर रहे लगते हैं from how I can see them. But Dharsab, if you may kindly respond to this further advocacy of the devil about is it an endless path then? Well, Kushalesu Dhammesu, if you see, in the very broad context, it is really, you never end learning, Even arhants have to learn how to teach, how to behave. In some cases, there may be some, quirks of idiosyncrasies and things of that kind. And a teacher like Sariputta or if the Buddha would point out to them, there are so many suttas where this happens, and an arhant is given to speaking harsh language. He calls everybody Chandala. And then all monks go, तो आप इसको arhant कह रहे हो, देखो तो सही क्या कहता है, सबको चंडाल कह रहा है. And then he calls him and says him, do you say so? He says, yes, Bhante, that somehow is my habit. Then he explains, Buddha explains, you see, in 500 lives before this, he was a highest quality Brahmin. And he had developed that habit, bad habit of everybody terming. Now, it was not actually Chandala, it's a kind of, it's a word which is more easily, kya tha wo word? I don't remember exact word. But its actually meaning is, rascal. It's a kind of something of that kind word.
which is a kind of language which is used even in a affectionate way in some rustic environment. People use those kind of words. So, in affection, you can call somebody Gada. That's that kind of a thing. So then he tells him he's got that habit, and then he says, "See, now once that person sees that, oh, this habit is really worth giving up, so finished. You drop it off." We hear, for example, in Ajahn Chah's case, we have studied that stillness flowing. We have that story. He remembers once Ajahn Sumedho, young Ajahn Sumedho, goes to him, "Lumpur, you chew beetle nuts. I don't like it." "Acha, you don't like it? Okay. From tomorrow I will not take." And just gave it up, finished. So there are skillful qualities of that kind also, which even an Arahant has to develop. What to talk of Sekhas who are still learning? By the very definition of Sekha means one is learning. Yeah? That's the way it is. In fact, there are discourses where Buddha says, "I don't praise people who are stagnant with good qualities." Of course, not those who are declining in good qualities. Praise only those who are increasing their good qualities. The Sutta is there. So obviously, there is no end to that. As long as we are Sekhas, there's obviously something to learn. Even when we are Sekha, even when we become Asekha, there are those idiosyncratic things where things which don't create sankharas, but which are kind of quirks in the person. That's what distinguishes Samma Sambuddha from Arhants. Samma Sambuddha is perfect in all Vijja and Charana. Everybody may not be perfect in Charana in the sense of worldly sense. So those aspects are always remain. So it's, I think, and you see, he's saying never content with skillful qualities. Not talking of the other, never content with money, never be content with robes. He's not talking of that. He's talking of kusulesu dhammesu, which means always find out what more you can do to improve yourself in terms of Dhamma, in terms of the acharan, the people, always. Okay, so that needs a huge deep breath to gird our loins and keep going, basically. So, Sharma Sahib, just before you ask your question, we are really drawing to the close. So in another 15 minutes or 20 minutes, we'll do the sharing of merits. तो क्योंकि हमने प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि एक सेक्शन होगा क्वेश्चंस का, तो अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ सकते हैं. और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने चर्चा की है अगर लगभग हम उस दायरे में रखें तो बेहतर है, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम संडे, हर ऑल्टरनेट संडे को लेते हैं. सो इफ योर क्वेश्चंस आर मोर जनरल इन नेचर देन मे बी दैट्स द राइट प्लेस टू आस्क देम. और जो आज हमने चर्चा की अगर इससे संबंधित कुछ है देन यू आर वेलकम टू डू दैट नाउ. सो शर्मा साहब का शायद माइक ऑन हुआ था. प्लीज प्लीज. That's up. After listening to you about the Arahant, when all his roots are wholesome, with thoughts or anything, how can he go wrong or unwholesome something? It's not coming from root. It is coming from the superficial personality aspects. All Arahants are not similar. They are different. They have their own special features of each one of them, which is a part of the, for example, the habit patterns which are not based on roots, which are not based on the roots, which are based on convention, on culture. There are so many such things. When you even in scripture when you read, see the difference between Sariputta and Moggallana, two of the chief great disciples. So much difference between Mahakassapa and Ananda. Enormous difference. So because of their personalities. Ananda is very hospitable and wants to gregarious, wants to talk, wants to meet, wants to adjust things.
Māgha is totally secluded. He doesn't want to get into any, and no hanky panky with him. You have to be very absolutely precise, and no discussions of which are not. He doesn't involve in discussions, or there are not many suttas where he is giving a talk. He won't. See? In terms of habitual tendencies. Yeah. That's what actually. They are culturally dependent, dependent on the culture, dependent on the past conditionings and so on. Past lives. Which are not based on unwholesome roots, which are based on just cultural conditionings. Thank you. Okay, so we can continue if there is nobody else. We can at least maybe come to the end of the section of twos. Yeah, they are. That's सब कुछ कह रहे हैं आप? We are near the end of twos. Sure. So we have actually finished all the ones that were in italics. जो दो छूटे हुए हैं, विद्या विमुक्ति and knowledge of ending and the knowledge of non-arising. Okay, so I'll read the last few lines that Sariputta talks about. These are the teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last a long time. That would be for the welfare and happiness of people, for the benefit, welfare, and happiness of devas and humans. So possibly we take up threes next time. Yeah. And we can do some sharing of merits unless anybody wants to say anything. Knowledge of ending here means cessation or something else? Yeah. Okay. So is knowledge of ending, do the scriptures themselves somewhere suggest that that is one of the qualities that develops in an arhat, that is part of the arhat phal, is it? Asavkhaya, when we talk of Asavkhaya. Asavkhaya Gyan. It is the third avinya of all arhats. First avinya is of past life of theirs, second of past life of others, third is knowledge of Asavkhaya. So that's the ending of all defilements. You probably meant Samma Sambodh, not arhat, right? Many arhats have that, but of course, the key aspect of that is the third one. A large number of arhats have all the three vimuktis. We have been studying in Therigatha, Theragatha, 3 avinyas, 6 avinyas, most of the time 3. But some have only one. That's, what should I say? Canonically or technically, the last avinya is the most important. वो ये वाली है जो knowledge of Asavkhaya Jnanam, yeah. And Nathidani Punam Bhavati, jo shabd aate hain na. And now there will be no more birth. So this is just a different word for that, summarized words for that. Okay, so we can close now. हमारी जो शेयरिंग ऑफ मेरिट्स चैंट है वो मैं करूँगा, जैसा कि कई बार हमने डिस्कस किया है हमारे सत्रों में। जब हम इस तरह के का एक्सर्शन करते हैं, जब हम धम्म स्टडी करते हैं, धम्म प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के साथ धर्म चर्चा करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग जो कि पुण्य अर्जित करता है, पुण्य पैदा करता है। So
हम सब ने पिछले कुछ घंटे साथ बिताए हैं और इस एफर्ट से, इस डेवलपमेंट से, इस भावना से जो पुण्य हमने कमाया है, हम एस्पायर करते हैं कि वो पुण्य व्यक्तिगत पुण्य नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ अर्जित हो, बल्कि उसके बेनिफिट्स हम सबके साथ शेयर करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो फॉर्चुइटस कंडीशंस आज बनी, जिस वजह से हम सब एकत्रित हुए, जिस वजह से हम इस धर्म चर्चा को कर पाए, जिस वजह से हमारे मन जिस हद तक डेवलप हुए, वो कोई हमारे पर्सनल क्वालिटीज, वो कोई हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो नेचुरल कॉजेज एंड कंडीशंस हैं। सो इन दोनों भावों के साथ, इन दोनों भावों को एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रथा है, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है कि किसी भी ऐसे काम के बाद जिसमें कि हम मानते हैं पुण्य एक्यूमुलेट हुआ हो, हम उस पुण्य को शेयर करते हैं और लोगों के साथ। हम उस पुण्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उन लोगों की तरफ, उन कंडीशंस की तरफ, उन कार्मिक एंसेस्टर्स की तरफ, जिन कंडीशंस की वजह से, जिन लोगों की वजह से, जिन कार्मिक एंसेस्टर्स की वजह से हम आज इस स्थिति में पहुंचे कि हमने ये होलसम काम किया पिछले कुछ घंटों से। ये पुण्य कुछ गाथाएं मैं अब चैंट करूंगा। और हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, खासकर कि मध्य प्रदेश से शिवेंद्र के न्यू बॉर्न नेफ्यू हैं who's in difficult conditions, so may we also remember this person and also many other people that we all know who are in need of help, and keeping them in mind, let's do this dedication. Let's remember our dear Rajendra-ji's wife. She is in deep distress. She may have to undergo another surgery. Manteji, so you may remember her, and also my uncle who is presently paralyzed. We share our merits. I share our merits with him and with her too. So if anybody else would like to mention any specific people, you're welcome. We know, for example, one of our Sangha members, Payal, her mother is also recuperating. So in this way, it's an opportunity if anybody would like. I mean, we have the time. So अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी का जिक्र करना चाहें, then you're more than welcome to unmute and say it. अंदमयं सब्बपतिदान गाथायो बनामसे पुण्यासिदानि कतस्यानन्यानि कतानि मे ते संच भागिनो होन्तु सत्तानन्तापमानका। जो भी पुण्य मैंने आज किए हैं या जो भी अन्य पुण्य किए हैं, उन सब के भागीदार अनंत असीम प्राणी हो। ये पिया गुणवंता च मह्यं माता पिता दयो दिट्ठा में चापिया दिट्ठा वान्ये मच्छता वेरिनो। वे मेरे गुणवान प्रियजन, मेरे दयालु माता पिता, अन्य तथस्थ अथवा वैरी, मैंने देखे हों या नहीं देखे हों,
सत्ता तिष्ठन्ति लोकस्मिन् ते भूम्मा चत्तु योनिका पच्चेक चत्तु ओकारा संसरन्ता भवा भवे। वे प्राणी जो इस लोक में हो, 3 लोकों की 4 योनियों में हो, 5, 1 अथवा 4 स्कंद वाले भव संसरण करने वाले हों। ज्ञातन्ये पतिदानं में अनुमोदन्तु ते स्वयं, ये च मं नप्पजनन्ति देवा ते सुं निवेदयुं। जो मेरे इस प्रतिदान को जानते हैं वे इसका अनुमोदन करें, और जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं देवता उन्हें इसकी जानकारी दें। मया दिन्नानं पुण्यानं अनुमोदन हेतुना सभ्ये सत्ता सदा हन्तु अवेरा सुख जीविनो, क्षेमापदञ्च पप्पन्तु ते सा सिद्धतं शुभा। मेरे इस पुण्य दान के अनुमोदन से सभी प्राणी सदा निर्वैर हों, सुखी हों, शांति का पद प्राप्त करें, उनकी सभी शुभेच्छा पूर्ण हो। नेक्स्ट पेज। अन्नमयं उद्दिश्य नादिष्ठान गाथायो मनामसे, इमीना पुण्यकामेना उपज्जय गुणोत्तरा, आचार्योपकारा च माता पिता च ज्ञातका। मेरे इन पुण्यों से मेरे गुणवान उपाध्याय, मेरे उपकारी आचार्य, माता पिता एवं संबंधी, सूर्यो चंद्रमा राजा गुणवंता नरापि च, ब्रह्म मारा च इंद्र च लोकपाला च देवता। सूर्य चंद्रमा राजा तथा गुणवान नर, ब्रह्म मार इंद्र यम तथा लोकपाल देवता। यमो मित्ता मनुस्सा च मज्झता वेरिकापि च, सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु पुण्यानि पकतानि मे। सभी मनुष्य चाहे मित्र हो तथस्थ अथवा वैरी हो, मेरे किए गए पुण्यों से सभी प्राणी सुखी हों। सुखं च त्रिविधं दिन्तु क्षिप्पं पापेथ वो मतंग, इमिना पुण्यकामेना इमिना उद्देश्येन च। वे ने त्रिविध सुख दें और वे शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें। इन पुण्य कर्मों से एवं इस समर्पण से इप्पाहं सुलभे चेव तन्हुपदान छेदनं, ये संताने हीना धम्मा याव निब्बान तो ममं, न सन्तु सबदा देव यथा जतो भवे भवे। तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो। जब तक मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो, जहाँ कहीं भी जन्म हो, मन की अहितकर वृत्तियों का सर्वदा नाश हो। ऊर्जो चित्तं सती पन्या स्थल्लेखो विरियं हिना, मारा लभन्तु नौका संकतंचु वीर्येषु मे। मेरा सीधा चित्त, सती, प्रज्ञा, तप एवं पुरुषार्थ से युक्त हो। मार को मेरा पुरुषार्थ कमजोर करने का कोई अवसर ना मिले। बुद्धाधि पवरो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो,
नाथोपच्चेक बुद्धो च संघो नाथोत्तरो ममं ते सोत्तमानुभावेन मारोक्तो संलभन्तु माम्। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ हैं, धम्म मेरा श्रेष्ठ उत्तम नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ हैं तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार की शक्तियों को कोई अवसर ना मिले। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता। अंते जी ये भी कर Sorry, दीजिए। Dharsam. We have time. Let us do this also. Sorry. Sure. No, that's fine. May I request you to do this? Visually, it's difficult for me. So if I can invite you to please. Okay. ये नेक्स्ट ही है ना, सार्वभौमिक कल्याण का विवेचन, बुक में हमारी नेक्स्ट है। I should do it और आप करेंगे? ये यहाँ डिस्प्ले है। No, the difficulty is that I don't have it. ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। अन्नमयं मेत्ताभरणं करोमसे, अहं सुखितो होमि, निर्दुःखो होमि, अवेरो होमि, अव्यापज्जो होमि, अनीगो होमि, सुखी अत्तानं परिहरामि। मैं सुखी हूँ, दुख से मुक्त हूँ, वैर से मुक्त हूँ, द्वेष से मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त हूँ। मैं सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सकूं। सर्वे सत्ता सुखिता होन्तु, सर्वे सत्ता अवेरा होन्तु, सर्वे सत्ता अव्यापज्जा होन्तु, सर्वे सत्ता अनीगा होन्तु, सर्वे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी वैर से मुक्त हों, सभी प्राणी द्वेष से मुक्त हों, सभी प्राणी चिंता से मुक्त हों, सभी प्राणी सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सके। सर्वे सत्ता सर्व दुःखापमुच्यन्तु, सभी प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो। सर्वे सत्ता लब्ध संपत्तितो मा विगच्छन्तु, सभी प्राणियों की सुख संपत्ति उनसे दूर न हो। सर्वे सत्ता कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण न्यङ्कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा
तस्य दायादा भविष्यन्ति। सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। कर्म ही उनकी विरासत है, कर्म ही उनकी योनि है, कर्म ही उनका बंधु है, कर्म ही उनकी शरण है। जैसे भी कर्म करेंगे, कुशल अथवा अकुशल, वही उनकी विरासत बनेंगे। Over to you, Bhante ji. भवतु सदा सुखी भवन्तु। समृद्धो भगवान् भगवन्तं अभिवादे। आखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। पटिपन्नो भगवतो संघं। Let's pay respects to Bhante ji. Pranam. Dutiyampi. Tatiyampi. Thank you. Thank you very much. Bhante. Thank you, sir. Thank you.